Hello guys, so let us deal with an interesting problem on impulse. Let's first read the problem to find out what the problem is asking, and then we will go into the details of the problem. The problem is stating a hardened steel ball of mass m is moving with a velocity u. It strikes a rough plane surface at an angle theta as shown. If the coefficient of friction between the ball and the surface is mu and the coefficient of restitution is E, then what is the impulse imparted to the ball by the surface? And this is the diagram given to us. So what is new in this problem? So new in this problem is that both the coefficient of friction and coefficient of restitution are given in this problem. So let's get started to how to solve this problem. So the first thing that we are going to do is to understand the motion of this ball, and then we will try to find out what exactly happens. So when the ball is approaching with a speed u and this angle is theta, so this one is also theta, and we can break the component of the velocity as u cos theta and u sin theta. So this is the first thing that we deal with. The next important thing to understand is that this plane surface is at rest before the collision as well as after the collision. So we are taking u1 equal to 0, v1 equal to 0, that is before the collision and after the collision, the plane surface is going to be at rest. Now we consider that the ball is going to rebound from this surface, and as it is rebouncing from this surface, it is going to have a velocity v, and this velocity v can be again broken into two components, velocity in the x direction and velocity in the y direction. Now what is exactly taking place in this problem is that this velocity is the region of approach. मतलब ये हो गया कि ये hardened steel ball इस rough surface के साथ कोलाइड ही क्यों कर रहा है, तो कोलिजन हो ही इसलिए रहा है because there is a component of velocity in this direction. क्योंकि ये वाला component अगर अकेले होता तो ये बॉल आगे ही निकल जाता, ये कभी कोलिजन करता ही नहीं. So this is the velocity responsible for collision, or we say this is velocity of approach and this one is the velocity of separation. Now as we define coefficient of restitution, so coefficient of restitution is defined as velocity of separation upon velocity of approach, and we write it as v2 minus v1 by u1 minus u2, where 1 and 2 are the velocities of the two particles involved in collision. So over here in this present scenario, we are considering 1 as the plane hardened surface. So this is going to be 2. So we are considering this one as u2 and this one as v2, and these are the two components which is responsible for approach, and this is the component responsible for separation. So if we substitute the values, so v2 is going to be vy, which is in the upward direction positive minus 0, divided by u1. So u1 is going to be 0, which is the hardened steel surface, minus of, and over here we say that since this component of velocity is in the downward direction, so we are writing it as minus u sin theta, and we get from here vy is equal to eu sin theta. So this is the first thought which is involved in this problem, that this component of velocity is responsible for approach and this component of velocity is responsible for separation, and we are using the formulation velocity of separation, velocity of approach and separation divided by approach, and we are using the technical definition of coefficient of restitution to reach this point. Now the question is asking us to calculate impulse. When we say impulse, we mean to say sudden change in momentum. So sudden change in momentum, and impulse is a vector quantity. So this component or the change in y will give us the impulse change in the y direction, or the impulse imparted in the y direction. So over here I am writing it as impulse imparted
along y axis. So impulse imparted along y axis. So we are writing it as Iy, and Iy can be written as m Vy, which we refer it as EU sin theta. This one is positive, minus of minus mu sin theta. So P final minus P initial in the y direction. So to calculate this, we are writing momentum final in the y direction, momentum final in the y direction minus momentum initial in the y direction. So in the y direction, final momentum is in this direction, which is mu sin theta minus of minus mu sin theta. And over here, on solving, we calculate the impulse in the y direction, which we write it as mu taken common e plus 1 sin theta. So this is impulse in the y direction. Until now, we have nowhere introduced coefficient of friction. तो अब इस पॉइंट में क्या होता है, जब ये बॉल आकर के यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, so there is a sudden change in y direction, or the impulse in the y direction is provided, and due to this, when the ball will be in contact with this surface, the friction will come into act, and for friction we need parameter mu and n, where n is normal reaction force. And since the problem is asking us to just calculate the impulse, we are calculating friction due to impulse. So friction due to impulse. So if we consider this as change in momentum, so if this change in momentum, if this change in momentum occurred in time delta t, so we say that the normal reaction force imparted due to this is going to be mu e plus 1 sin theta upon delta t, and due to this normal reaction force, a friction is going to come into act, and over here we write F is equal to mu into normal reaction force, and this is giving us the value of impulsive friction. We are just calculating impulsive friction. We are not considering the weight, because we are just calculating impulsive friction, and this is equal to mu multiplied by normal reaction force, and over here we write it as mu into normal reaction force multiplied by delta t. This is friction and this is impulsive friction, where we calculate it as F into delta t. So if we solve this, we get this impulse in the x direction, because friction is going to oppose this motion. So when the hardened steel ball is going to strike the surface, the friction is going to oppose this motion for a very short duration of time, creating an impulse in the x direction. And over here, if we multiply this parameter, so delta t will cancel out, and we are getting mu times of e plus 1 mu sin theta, where this is impulse in the x direction. So this was frictional force. Frictional force multiplied by the short duration of time delta t is giving us impulsive friction, and this is the contribution in the x direction. So over here, we can say that this parameter mu e plus 1 sin theta, if we are putting this as x, okay, we put it as y because it is Iy, then we can say that Ix is equal to mu times of y. We have done this to simplify the calculation which is going to come next. Now, since the problem is asking us to calculate the magnitude of impulse, and impulse is a vector quantity, so we are writing it as Ix square plus Iy square root, and therefore we write it as mu square y square plus y square root, and the final answer that follows for the magnitude of impulse is equal to root over mu square plus 1 times y, where y is equal to e plus 1 mu sin theta. So this is the final answer which we are looking for, root over mu square plus 1 e plus 1 mu sin theta. Now comes the interesting part कि सर ये वाला प्रॉब्लम अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो क्या आपने इतना मेहनत करने वाला?
अगर ये जेईई एडवांस में आ जाता है या ऐसा ही कोई प्रॉब्लम किसी और दूसरे एग्जाम में आ जाता है, वी हैव फोर प्रॉब्लम्स, फोर ऑप्शंस गिवन टू अस, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? क्योंकि इतना फिजिक्स एक साथ सोच पाना ये डिफिकल्ट टास्क है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इसको एक बार में तो नहीं सोच पाया। और जब स्टूडेंट एक एग्जाम हॉल में रहता है, एग्जाम हॉल सिनेरियो में रहता है, तो एक साथ इतना कुछ सोच पाना इज डिफिकल्ट टास्क। तो अपने आते हैं कि इस प्रॉब्लम को अगर ऑप्शन दिया जाए तो कैसे डील करना है। ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं प्रॉब्लम को करके भी दिखाया हूं कि पहले अपने फिजिक्स समझ लेते हैं कि फिजिक्स कैसे काम कर रहा है, और फिर अपने बात करेंगे कॉमन सेंस कैसे काम करता है। तो अगर ये प्रॉब्लम मेरे को एग्जाम में दिया हुआ है तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व ही नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है जिसमें कि एक ऑप्शन होपफुली ये भी होगा, तो अपने सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं फ्रिक्शन को हटा दूं। तो फ्रिक्शन को हटा देता हूं, मतलब अरे प्रॉब्लम में दिया हुआ साहब कैसे हटा देंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन में म्यू को 0 पुट कर दूं। तो अगर मैं ऑप्शन में म्यू को 0 पुट कर देता हूं तो मैं यहाँ पे वो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं कि अगर अपने म्यू को 0 कर देते, इफ म्यू बिकम 0, तो अगर म्यू को 0 कर देते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो खाली 1 बचा। तो वी आर लेफ्ट विद e प्लस 1 mu sin थीटा। सो वी आर गेटिंग e प्लस 1 mu sin theta. So the answer of impulse suddenly becomes this. तो अब अगर मैं इसको चेक करता हूं कि ये वाला वैल्यू किसमें आता है, मतलब 4 ऑप्शन पुट करने से क्या मैं इसको सोच पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो मेरा प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो गया। तो यहां तक तो मैं कर सकता हूं। अगर आप यहां तक का फिजिक्स जानते हैं तो आप यहां तक कर लिए इसको। यू जस्ट सॉल्व इन दी वाई एक्सिस डायरेक्शन, ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया, फिर आपने ये वाला सॉल्व किया, और यहाँ पे आप रुके। आपको समझ में नहीं आया कि फ्रिक्शन से कैसे डील करना है, तो आप यहां तक सॉल्व किए और आपने लिख दिया कि अगर फ्रिक्शन 0 है तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि आपने 4 ऑप्शन चेक किया, तो किसी एक में अगर ये मिल जा रहा है कि म्यू को 0 कर देने से ये वाला वैल्यू आ जा रहा है, देन यू कैन बी वेरी हैप्पी विद द ऑप्शन, आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो क्या करेंगे सर? सर एक काम करते हैं, अपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 0 करके देख लेते हैं। अगर मैं तो अपने एक काम करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 0 करके देख लेते हैं। इफ आई पुट e इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो सर e इक्वल टू 0 का मतलब ऐसा हो गया कि पार्टिकल जो है, बॉल जो है, वो आया और वो आने के यहीं चिपक गया, तो वापस उठा ही नहीं। तो वापस अगर उठा ही नहीं तो बस ये बॉल आया और यहाँ पे आकर चिपक गया। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो वी आर गेटिंग दी आंसर एज i इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट mu sin थीटा। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, e इक्वल टू 1 हो जाए और म्यू 0 हो जाए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये अगर डायरेक्टली आप सोचते हैं और इसमें एक और चीज करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आता ही है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये सीधा सीधा आता, ये यू आता ऐसे भिड़ता, और ये भिड़ने के बाद ऐसे चला जाता, तो मेरे को तो यही केस आता। सपोज आई एम दैट स्टूडेंट जिसको बस यही वाला आता है कि बस ये वाला बॉल ऐसे आया, भिड़ा और ऐसे ही चला गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो कोई पार्टिकल आया, एमयू से आ रहा है, भिड़ा, एमयू से भिड़ने के बाद वापस चला गया एमयू से, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 2mu। तो 2mu ये लेकर के आने के लिए क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने लगाया? हम लोगों ने कह दिया कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा वैल्यू 90 डिग्री कर दिया। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो म्यू को 0 कर दिया है, और ई का वैल्यू 1 कर दिया। तो यहाँ पे आया, ये बॉल भिड़ा, ये बॉल भिड़ने के वापस से चला जाए। तो अगर मैं 4 ऑप्शन में ये वाला कंडीशन डालता हूँ और आंसर अगर 2mu आ जाता है, तो मतलब मैं उस ऑप्शन को भी टिक कर सकता हूँ। तो रियल इफ आई सी दिस, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कर दिया गया 0, तो 0 प्लस 1 खाली 1 बचा। ई का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2mu sin 90 का वैल्यू हो गया 1। तो वी आर गेटिंग 2mu which is the necessary condition which I was looking for। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रॉब्लम आपके पास एग्जाम में आता है तो एक तरीका ये है कि आप कितना फिजिक्स सोचें। बाकी अगर आप सोच पाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है ये अगर ऐसा सोच पाए, और अगर नहीं तो यू कैन बी स्मार्ट। आप अगर स्मार्ट है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। आप पहले ये सोच सकते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट सोचने का ये है कि आप डायरेक्टली ये सोचें कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन में मानो ही नहीं, और अगर कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्या ये वाला वैल्यू आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अगर ऑप्शन में ये वाला वैल्यू आ जाता है, 4 ऑप्शन में एक ही में ही आता है, यू आर हैप्पी। और अगर इसके बाद अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो गया। अब मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा कुछ होगा कि आपसे सॉल्व भी कराना चाहे एग्जामिनर
फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा. So this is how you are supposed to deal with these kind of a problem, the smart way, the tough part, and the physics. I hope you understood this problem. The problem is a very significant one which deals with impulse where we have coefficient of friction as well as coefficient of restitution. Please like, share and subscribe for more such content. Enjoy. Happy learning.